Hello students, how are you all? Hope you all are good. I, Abhishek Tripathi, welcomes you in our YouTube learning channel. Today, I'm going to teach you the the third exercise of your chapter first, that is integers. The third exercise is all about the multiplication of the integers, and we will study about the properties of multiplication. Okay. In our previous video, we have already discussed about the properties of addition and subtraction, such as closure property, associative property, and commutative property. In previous video, we have already discussed about the role of 0, role of 1, and negative of a number. So all these concepts are useful for the better understanding of multiplication of integers. Okay. So the very first topic of your textbook on page number 9 is multiplication of integer. The first topic is multiplication of a positive and a negative integer. Okay. Pay attention. Okay. The first topic is multiplication of positive and negative number or integer, positive or negative number or integer. If I say negative number, that means negative number is only a integer. Okay, let me write this properly. Positive and negative number. Okay, so this concept is saying this, that you have a number whose sign is plus, for example 4, and another number whose sign is minus 8. Okay, first you have to understand the concept of multiplication. Multiplication is nothing but a repeated addition. What? Repeated addition. So before solving this question, I want to explain you the concept of multiplication, that is repeated addition. It means you are adding the given number, you are adding a given number at a particular times. जैसे this question says minus 8 into 4. Minus 8 into 4. What does it mean? It means you are adding 8 minus 8 how many times? 4 times. Whatever value you will get after adding minus 8 4 times, the same value you will get after multiplying minus 8 with 4. Okay, so these are the same sign numbers, so you will add the digits, that is 8 8 8 8. So what you will get? 32, and you will put the same sign, the sign applicable on the numbers, that is negative. It means you are repeating the addition. You actually what you are doing, you are adding these numbers, and after adding these numbers you are applying the sign of the all the numbers. So this is the sum of 8 into 4. Now the concept for adding a multiplication of positive and negative number, what does it means? So you can take this as an example. If it is a note, if you are means me, you, or whoever want to do the multiplication. If you are multiplying two numbers, how many numbers? Two numbers with
different sign with different sign. Different means one is positive, other is negative. So these are the different sign. Positive is the opposite to the negative, and negative is the opposite to the positive, and the multiplication is opposite to the division, and division is opposite to the multiplication. So if you are multiplying two numbers with different signs, signs means one number is a positive number and other one is the negative number. If you are multiplying two numbers with different sign, then product is always an नेगेटिव नंबर. प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? नेगेटिव नंबर होगा. कब? जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का इनटू कर रहे हो, तो उसके बाद जो भी प्रोडक्ट मीन्स द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन और रिजल्ट ऑफ द रिपीटेड एडिशन, यू विल ऑलवेज गेट द नेगेटिव नंबर. जैसे इसको इनटू करना है, सो व्हाट यू विल डू, you will multiply 8 and 4, that is 32, and put the sign of negative. Okay, this is what we do when we multiply one positive and one negative number. In your textbook there are so many examples given. Try these. Find next. Try these on page number 10. Find 4 into minus 8, 8 into minus 2, 3 into minus 7, 10 into minus 1 using number line. Now, let's have an exercise or a question on number line. चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन नंबर लाइन पे कैसे परफॉर्म होता है. I am taking a smaller number, that is 8 into minus 2. 8 into minus 2. It means minus 2 is being added up to how many times? 8 times. So कैसे ऐड होगा देखिएगा. It is a minus 2. Okay. Make a number line. Okay. This is the number line. I am using 0 here. Now you want to add. So when I was teaching you the number line in our previous videos, I have already explained you about if you are adding the two numbers of same sign, then you will move. If you are adding two negative numbers, then you will move left side of the number line. So this is the right side of number line and this is the left side of number line. Now you having minus 2. So I am taking the interval of 2 in number line. Okay, this is minus 2, this is minus 4, this is minus 6, this is minus 10, this is minus 12, this is minus 14, and this is minus 16. Now you are adding the negative sign numbers. So you are at the 0 position. Now you will move to the minus 2. How many times you have to add? 8 times. So this is 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 time, 6 time, 7 time. Now you can think अभी तो 7 टाइम हुआ. So we will count from this position. ऐसे आ रहे हैं इस तरीके से. So where we reached? We reached at minus 16. So the product of 8 into minus 2 is what? Minus 16. Okay? समझ में आ गया नंबर लाइन पे? जो भी नेगेटिव नंबर है आपके पास, उस नेगेटिव नंबर को ऐड करना है. क्या करना है? ऐड. क्यों करना है ऐड? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का सिंपल से मतलब होता है रिपीटेड एडिशन. अब अगर नेगेटिव नंबर है और उसका एडिशन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेफ़्ट साइड में उतने टाइम्स मूव करना पड़ेगा जितने टाइम्स आप एडिशन करना चाह रहे हो या मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हो. तो आपको क्या मिल जाएगा? एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स. यहाँ पे भी दो नंबर्स हैं, एक है माइनस 2 और एक है प्लस 8. वन इज़ द पॉजिटिव नंबर एंड अदर इज़ द नेगेटिव नंबर. सो यू आर गेटिंग व्हाट? अ नेगेटिव नंबर एज अ प्रोडक्ट. तो ये चीज़ याद रखना कि इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स विथ डिफरेंट साइन, यू विल ऑलवेज गेट द नेगेटिव नंबर एज द प्रोडक्ट.
So you have to do the try these box questions on page number 10. Oh, there is a simple mistake I have committed. That is, here should be minus 8 and here should be minus 10 and here should be minus 12 and there should be 14 and the 16 should be here. So you will get 8. Now you look at this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8. Okay. So this is how you will add the multiply the two, one positive and one negative number. Okay. Sorry for that mistake which I have written the wrong number at the place of minus 8. Okay. Please consider this as a correct solution. ना उस पर आपको ध्यान नहीं देना, वो मेरे से गलती हुई, so I apologize. Now moving to the next, you have to do the try these box questions in page number 10 and page number 11. Now we are moving, okay, one general formula for the this particular condition is minus a into plus b minus a into plus b. Plus b means the number is positive number, not the plus sign, means not you are not going to add, the sign of the number is positive, is equals to या तो a माइनस होगा या तो b माइनस होगा. So if a is minus then okay. So what you will get, a into b is always a negative number. Okay. Now moving to the next, multiplication of two negative integers. Okay, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, है ना. Now we are moving to the next, that is multiplication of two negative integers. ध्यान से देखिएगा. Okay, when you are multiplying two numbers with opposite sign or different sign, you are getting the negative number. Now you are multiplying the two negative integers. Negative integers means same sign of number. Multiplying two negative integers. What you are doing is multiplying two negative integers. Now pay attention. If you are multiplying two negative integers, ध्यान से देखिएगा, minus 4 into minus 5, minus 4 into minus 5. So minus 4 into minus 5 means you are performing the addition, that is a concept for the multiplication. Minus 4 into minus 5. So what you will do, you will multiply the numbers, that is 5 into 4, that is 20. And when you will multiply two negative signs, when you will multiply two negative signs even times, how many times? Even times. When you are multiplying negative signs at even number of times, तो आपको क्या मिलता है? हमेशा प्लस मिलता है. क्या मिलता है? प्लस. कैसे देखिएगा, यहाँ पे माइनस कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स. तो 2 टाइम्स माइनस है मतलब इवन टाइम है. इवन टाइम है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव. समझ में आ रही बात आपको? इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव. तो अगर मैं बात करूँ कि माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी. माइनस ए इंटू माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए इंटू बी. मतलब ए इंटू बी जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा. ये याद रखना है. तो अगर आपको एक नोट लिखना हो तो क्या लिखोगे? इफ two negative numbers are multiplied even times. How many times? Even times. Then the product is always
then the product is always a positive number. Okay, positive number. Now what I am saying is, if you are multiplying two negative numbers, how many numbers? Two. How many times? Even time. Even means 2 times, 4 times, 6 times, 8 times, mean the multiple of 2. So you will always get the positive number. एग्जाम्पल से देखते हैं जरा सा कैसे होता है. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल आई एम मल्टीप्लाइंग -4 into -5. How many times? Even times. 1 and 1, that is 2. 2 is an even number. You will multiply, you will get what? 20 as a positive number. Now same numbers I am multiplying with odd times. How many times? Odd times means 1, 3, 5, 7 and so on. So what I will get? -4 into -5. -4 into -5, that is +20. Okay. Then -4, and if you pay enough attention, it is a multiplication of positive number and negative number. पढ़ा है अभी हमने आपसे सबने पढ़ा होगा. This is the multiplication of positive number and negative number. So you all know that the multiplication of a positive and a negative number is always an negative number. 24 ja what? 80. 80 is your what? Answer. Getting my point? If you are multiplying two negative integers even times, you will get the positive as a product. And if you are multiplying two or more than two integers, negative integers, on odd times, so you will get the negative as a product. Okay. नाउ ट्राई दिस. अब देख लीजिएगा यहाँ से, इसमें कुछ एक गेम दिया हुआ है, समझिएगा. गेम में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि व्हाट इट इज़ द वैल्यू, हाउ यू हैव टू प्ले दिस गेम. ओके, देखो क्या है, इस गेम को खेलना है तुम लोगों को, ठीक है. वहाँ पे क्या है, 2 डाइस हैं. कितनी डाइस हैं? 2 डाइस हैं. एक ऐसी, एक रेड है, एक ब्लू है, एक और ब्लू, मतलब 2 ब्लू और 2 रेड है. तुमको क्या करना है, अपने बैग से 2 डाइस निकालनी है, उनको ऐसे प्ले करना जैसे लूडो में खेलते हैं, और उसको फेंकेंगे आप. फेंकने के बाद, अच्छा जो रेड डाइस है किसके लिए? नेगेटिव के लिए. रेड डाइस इंडिकेट्स ब्लू. हाँ, जो ब्लू डाइस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? पॉजिटिव नंबर्स. एंड जो रेड है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? नेगेटिव नंबर्स. ओके. तो आपको, आपके बैग में चारों हैं, आपको बैग से 2 निकालनी है. कोई भी 2 निकाल सकती है, ठीक है. वो दोनों ब्लू हो सकती हैं, वो दोनों रेड हो सकती हैं, एक ब्लू एक रेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आपको निकालना है और आपको थ्रो करना है. अब अगर आपके पास इन दोनों डाइस में मान लीजिए कि आपने एक ब्लू निकाली और एक आपने क्या निकाली? रेड. तो रेड में, ब्लू में आपको मान लीजिए मिला 4, रेड में मिला आपको मान लीजिए -3. 3 ही मिलेगा, तो माइनस उसको मानेंगे अपन, क्योंकि जो रेड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नेगेटिव. तो आपको इन दोनों का इनटू करना है. कितना मिलेगा? 12 -12. तो आपका जो ये चार्ट बना हुआ है पेज नंबर 13 में, उसमें आपको कहाँ पहुँच जाना है? -13 में. ये सांप सीढ़ी में खेलते हैं. खेलिएगा इस गेम को, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है ना. इससे आपको आइडिया लगेगा कि नेगेटिव नंबर्स का इंटू करने से क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर का इंटू करने से क्या मिलता है. Now the next topic is product of 3 or more negative integers. I have already told you, if you will multiply 2 negative numbers, या 2 कह लीजिए 3 negative numbers, if you are multiplying 3 negative numbers even times, तो आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा एज अ प्रोडक्ट. और अगर आप 3 नेगेटिव नंबर्स या 3 से ज़्यादा नेगेटिव नंबर्स को ऑड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव. ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा एक बार. नाउ वी आर मूविंग टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ध्यान से देखेंगे आप. प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ी थी, दैट इज़ एडिट, एसोसिएटिव, क्लोजर एंड कम्यूटेटिव.
यही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, यही हम फिर से पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट, इंटीजर्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो इंटीजर्स का बात होगी ही। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग द टू सेम काइंड ऑफ नंबर यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ नंबर इफ दैट पर्टिकुलर नंबर सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ और सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। ठीक है, मीन्स अगर मैं 4 into 4 कर रहा हूँ, सो आई विल गेट 16। 4 इज अ natural number, 4 is also a natural number, and 16 is also a natural number. So this is what we call closure. If you are multiplying two natural numbers, so the product is also a natural number. If you are multiplying minus 4 into 4, that is minus 16. So minus 4 is an integer number, 4 is an integer number, and you are multiplying 16, getting 16 minus 16, that is also a integer number. So you may say this, product of two integers is always an integer, दो इंटीजर्स का गुणा करने से आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, इंटीजर। यू विल ऑलवेज गेट एन इंटीजर। क्लियर मेरी बात? दो बस से नहीं होगा, 10 से करोगे, 20 से करोगे। मीन्स इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स many times, then you will definitely get the product as the number of or the set of integers. Okay, so this is what the closure property. Now moving to the next property, that is, this is what you have to remember. Next property is commutative. Commutative property. Commutative property means if you are grouping the numbers, if you are grouping the numbers, not grouping, that is for the associative. Okay, commutative property means if you are changing the order of the numbers does not affect the answer. If you are changing the order of the number does not affect the answer. Order means 5 into 4, what you will get? You will get 20. Okay, if you are doing 4 into 5, then also you are getting the same number. Means order of the number does not affect the answer. So you may say this, a into b is always equals to b into a. ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको लेके करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम एडिशन में खूब चर्चा कर चुके हैं कि क्या होती है क्या नहीं होती है, अब हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव। Associative property is simply means if you are grouping the numbers, means the grouping of the number does not affect the result. If you are multiplying 3 numbers and you are first multiplying 2 numbers, then you are multiplying the third number, so whatever result will come will not be changed when you are multiplying first number at the last and the second and third number at the first. एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, जैसे देखिए, इसमें ग्रुपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुपिंग डज नॉट अफेक्ट द आंसर। 3 into 2 into 5. So first I am multiplying this, then I will multiply this. 3 2 just 6, multiply 5, that is 30. Now change the groups. 3 into 2 into 5, that is equals to 3 into 5 2 just 10, that is 30. Again change the groups. 3 into 5 into 2, that is 15 into 2, 30. By grouping the numbers, first I grouped these two numbers, then I have multiplied with 5.
then I grouped these two numbers, then I have multiplied by 3, then I have grouped these two numbers, then I have multiplied by 2. The result is unchanged. Okay, so it simply means property, associative property states that the grouping of the number does not affect the result. So you may say this, okay, इंटीजर हो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इंटीजर है, होल नंबर है, कुछ है नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए देखते इसका मतलब क्या हुआ, a इंटू बी इंटू सी is always equals to a into b into c is always equals to a into c into b. This is what the associative property states. Okay, now moving to the next property, that is multiplication of 0. Multiplication by 0. Multiplication by 0 simply means if you will multiply any number with the 0, the whole product will become 0. For example, 12 into 0, that is 12, minus 5 into 0, that is 0, 12 into 0, that is 0, minus 5 into 0, 122 into 0, 20 is equals to 0. So simply multiplication by 0 means a into 0 is always equals to 0. Okay, getting my point? So multiplication by 0 is always making the whole product 0. If you multiply any number with 0, you will get the result as 0. Now moving to the next property, that is multiplicative identity. Okay, please remind your concepts. When I was teaching you the addition by 0, the addition by 0 does not affect the answer, and that was the additive identity. Okay, now the next is multiplication by 1. Multiplication by 1. Multiplication by 1, if you will multiply any number with 1, it will not change the answer. 0 से इंटू करने पे हमेशा क्या मिलता है, 0. अगर आप 1 से इंटू करोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर. फॉर एग्जांपल 15 into 1, that is also equals to 15, minus 210 is into 1 is equals to minus 210, minus 5, 15 into 2 into 1 is equals to what, minus 15. So multiplication of 1 by 1 does not affect the result. So that is why this is also known as multiplicative identity. Multiplicative identity. Okay, this is also known as multiplicative identity. So in simple words, you can say a into 1 is equals to 1 into a is equals to a. A is a integer. A is a what? A integer. Now moving to the next, that is distributive property. Distributive property. Distributive property. Okay, distributive property simply means कि अगर आप नंबर्स को पहले ऐड कर देते हो फिर गुणा करते हो तब क्या आंसर आएगा, और अगर आप पहले गुणा कर देते हो फिर ऐड करते हो तब क्या आंसर आएगा. इसके बारे में है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ध्यान से देखिएगा. ठीक है, ओके, देखिए ध्यान से. 15 इंटू 2 प्लस 3. ओके, ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम. कितना मिलेगा, 15 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज़ 5. 15 इंटू 5 दैट इज़ 75. ये मिल गया हमको. ये हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, सिंपल जो ऑपरेशन से वर्ड मास फॉलो किया उससे. अब इसको हम करते हैं दूसरे तरीके से. 15 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 3. 15 into 2 that is 30, 15 into 3 that is 45. Now if you will add them, you will get what, 75. Means order operations, the sequence of operation does not affect the answer. हमने पहले एडिशन किया फिर इंटू किया तो इतना मिला, हमने इंटू किया
फिर एडिशन किया तो कितना मिला 75। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल इसमें अगर हम लेना चाहें, देखते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से दूसरा एग्जांपल। अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होता तो क्या होता है, 15 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 2। 15 into 3 minus 2, that is 15 into 1 equals to 15 3 जा 45 minus 15 2 जा 30। 15 1 जा 15, 45 minus 30, that is also equals to 15। Means the whether you are adding the numbers first and subtracting the number first, then you are multiplying, or you are multiplying first, then you are adding or subtracting, does not affect the answer or does not change the product, does not change the result. So this is what we call as distributive property. So if you want to write this in general notation, so what it will be, a into b plus c is always equals to a into b plus a into c. Okay, so this is what you have to revise, and you have to complete all the try these box which are written in page number 18, page number 12, page number 10, page number 11. So you have to complete all these try these box. Okay, and stay home, stay safe. For more videos, please like, share and subscribe our channel. Thank you.